Hello friends, good morning. Today is 21st of February 2024 और मेरा नाम है शानंदो दास. I'm a forex and commodity market specialist with global markets multi-asset trading expertise. और मैं आज ये वीडियो में आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं. टुडे वी हैव कनेक्टेड टू डिस्कस अबाउट द forex and commodity markets. What are my trades, what I'm thinking of doing in terms of forex and commodities, how are my ideas I'm going to share with you. So लोग जो मेरे learners हैं जो मेरे followers हैं, you can at least get an idea. आई होप ये वीडियो आप जितना लेट तक पॉसिबल हो वॉच करेंगे, क्योंकि डिफरेंट जगह पे आप डिफरेंट चीज लर्न कर सकते हैं. So let's go to the this video. We'll try to keep it a mix of English और थोड़ा बहुत हिंदी, so तो ज्यादा ऑडियंस ये रीच हो पाए. So first, our job will be to look at the news. Let's look at China stock hit multi-week high. इसमें हम लोग already investment की बात किए थे. And this trade जो हमारे वो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं. We are, I hope ये अगर आप इसमें कोई भी पोजीशन लिए हैं, चाइना लार्ज कैप ETF, चाइना MSCI ETF, CSI, these are broadly going well. Once the US market opens up, this exchange traded funds will get updated. ये जो हम लोग खेल रहे हैं, दिस इज मोर ऑफ अ पोजिशनल इन्वेस्टमेंट देन रेगुलर ऑफ अ ट्रेडिंग. इसके लिए हम डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं. वी आर यूजिंग दैट. इसके साथ जो बॉन्ड साइड में आई एम इंटरेस्टेड इन दिस डूइंग दिस TLT, विच जो लोग मेरे साथ क्लास किए हैं, यू नो दिस इज लॉन्ग टर्म ट्रेजरी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वन फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब let's come to once again, let's get back to the news first. I'll come to the bonds. Hong Kong stocks jump over 7-week high. This is positive हमारे investments के लिए. Here Asian markets are tracking Wall Street losses. Wall Street में हम लोग देखे थे already weakness दिख रहा था. We discussed about it कि S&P down, Nasdaq में weakness दिख रहा है. So ये जो marginal fall है, हम लोग उससे कोई problem नहीं है. We are aware of that. यहाँ पे ऑयल एजेस हायर ऑन मिडल ईस्ट टेंशन. मिडल ईस्ट में टेंशन हो रहा है, ये तो हमें पता ही है. हम लोग फॉलो करें. अगर आप मेरे ग्लोबल मैक्रो का वीडियो देख रहे हैं, यू आर ऑलरेडी नो आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस एंड आई एम ट्रैकिंग. सो एंड हम लोग क्रूड में लॉन्ग पोजीशन रखे हैं, सो देयर इज नो मेजर टेंशन ऑन इट. वी आर स्टिल ऑन अ गुड साइड ऑफ द न्यूज. So broadly, एक बार न्यूज देखने के बाद what we do, that Japan is weak, Hong Kong is coming back, comeback story. We go to the economic calendar. पहले कल क्या हुआ था वो हम लोग देखते हैं. कल सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था which turned out to be चाइना का जो इंटरेस्ट रेट यूजुअली एक नॉन इवेंट होता है, but they did more than expected. It was consensus कि 15 basis points rate cut होगा, but they gave 25 basis points. So it looks like People's Bank of China and China is really a bit serious about now reviving their economy. They're trying hard, and with inflation lower, I think they should have lowered the interest rate further, because उनके पास रूम है. इन्फ्लेशन काफी स्पीडे नीचे गया है उनके यहाँ पे. ओवरऑल डिमांड डाउन, एक्सपोर्ट ग्रोथ डाउन, सो फर्दर एकोमोडेशन पॉसिबल था. बट 1 ईयर लोन रेट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ. इट इज मोर ऑफ द बेली ऑफ द कार. या 5 ईयर लोन रेट में. इसके अलावा आया कनाडा का इन्फ्लेशन डेटा. कनाडा का इन्फ्लेशन डेटा भले ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, एज ए इंडियन पर्सपेक्टिव, कैनेडियन डॉलर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, इफ यू आर कनेक्टेड विद मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इट वाज सो इसमें इन्फ्लेशन इसमें हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कनाडा इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका के पार्ट है. अगर वहां पे ओवरऑल इन्फ्लेशन जा रहा है, तो मतलब ये ट्रेंड यूएस में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है. And this inflation is significantly down in Canada headline. Core inflation is also down. So I have been expecting कि US में inflation will go down. अभी तक जितना दिख रहा है
फ्यूचर में ऑयल शॉक एंड अदर्स, तब सिनारियो माइट चेंज, बट करंटली द रीडिंग शुड कम डाउन फर्दर। एक्सेप्ट जो कंपोनेंट थोड़ा ट्रबल दे रहा है, दैट इज द वेज इन्फ्लेशन। वेज इन्फ्लेशन काफी हाई है, बोथ यूके यूएस। वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इन द ओवरऑल लेवल पे, ये जो कोर इन्फ्लेशन होल्ड कर रहा है। आज का जो इंपॉर्टेंट डेटा है, आज सिग्निफिकेंट कोई भी मेजर इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। इट्स लार्जली फेड स्पीकर्स हैं, बॉस्टिक एंड बोमन। दिस विल बी नॉट, यू हैव टू, यू कैन हियर देम आउट, आप उनको फेड के वेबसाइट में मिल जाएगा। बट अदर देन वो डेटा जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, दैट इज this particular bond auction. This is 20-year longer term bond auction. हम जो देखते हैं मार्केट में, this 10-year 20-year, this is market based, market implied yield, but the actual yield पता चलेगा when there are auction on it, and actual purchasing will happen. So from that bid ask we'll be able to gauge the bond market mood, क्या उनको लग रहा है towards inflation. अब चलिए एनालिसिस चालू करते हैं। इसके लिए फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं बॉन्ड मार्केट को। सो बॉन्ड मार्केट के लिए आई यूज द फाउंटेन ऑफ गोल्ड और द मदर सेटअप। इसको अनहाइड कर दूंगा एंड आई कैन सी विद द 2-year इंटरेस्ट रेट इज, ये नीचे की तरफ मोमेंटम का टर्न है। इट इज स्ट्रगलिंग एट अ की लेवल, बट ब्रेकआउट भी पॉसिबल है। तो इसमें आई विल कीप एन अलर्ट। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है सिग्निफिकेंटली, दिस इज डॉलर पॉजिटिव, सो मैं एक ऑल्ट ए करके एक अलर्ट डाल देता हूं कि प्राइस एक्शन बुलिश, या जब अभी प्राइस एक्शन न्यूट्रल है, प्राइस एक्शन बुलिश का अलर्ट लगा दिया, देन आई विल बी एटलीस्ट अवेयर फ्रॉम द बॉन्ड का फंडामेंटल साइड से। फिर लॉन्ग टर्म 10 ईयर इज स्टिल ग्रेजुअली, हम लोग देखे थे ऊपर जा रहा है। इट हैज फर्दर पोटेंशियल एटलीस्ट टुवर्ड्स 4.66, 4.5, 4.54, 4.66। अब 10 ईयर जब ऊपर जा रहा है, this is really not the time to go into TLT. TLT is long-term treasury ETF. We have discussed this. We'll wait for further investment opportunity weekly and daily chart के जरिए। weekly में देखिए एक buy signal. So long-term treasuries can actually rise if it can sustain above 4.16. And to drop, we need further break of 4.16, especially 4%. तो यहाँ पे मैं अपना अलर्ट लगा चुका हूँ। इट लुक्स लाइक इट विल गो अप। आई डोंट नो व्हाट कुड बी द impact, रीजन कुड बी Middle East tension, could be other factors which will contribute to the rise in interest rate, and that will be quite bearish for, I think, overall equities. So there is a bit of concern how this is going to play out. It could go into a consolidation कि ऐसे ऐसे move होते रहे, but ultimately whether ये 4.15 is it going to be a support or is it going to be a resistance by April or May, it will be clear. I think May, if it has to go down by May, Federal Reserve has to give the rate cut, and it might change its tone and give the push towards March. So let's see how it goes. अब I'll keep you updated. Currently हम लोग इसमें interested नहीं है. We had a beautiful ride. हम लोग लंबा पैसा मिला है. It was a 25% beautiful run in the bond market. Now it is, as time has come to broadly exit from the TLT, except for the some cyclical long term जो लोग swing investment कर रहे हैं, so it's time to exit. 30-year long term bonds में भी जो और भी longer term bonds है उसमें भी दिख रहा है, so we want a full red structure फिर से bond में, long term bond fund में invest करने के लिए। इंडिया में मेरा आउटलुक क्या है बॉन्ड फंड का? इंडिया में मेरा बॉन्ड फंड का आउटलुक, आई गो टू द वीकली चार्ट ऑफ 10 ईयर। आई रिकमेंड 10 ईयर अगर आप बॉन्ड फंड पे जा रहे हैं।
Then what is the current way is you look at the weekly chart through the rainbow, and the jab se entry aaya hai, you have moved into profit into bond funds. So long-term bond funds can still further rise as interest rate can decline, and that means long-term bond fund price will go up. So you may have a good gain if you still invest in the bond fund, but इसमें एक caution कि आपको right time पे करना best होता है, हो सके यहाँ पे reversal आए, but it can looks like it is going to decline a bit further. Overall inflation level control में है इंडिया में, and I think interest rate has somewhat peaked, and RBI the next move likely to be a rate cut. So this is Indian bonds. Now we will go to the currency market. Currency market में हम लोग सबसे पहले देखेंगे dollar index को, and we will for our trading, मेरा trading के लिए I use the daily chart. We have discussed कि मैं dollar से exit. That's the beauty of the rainbow. Whenever there's a chance of reversal, look देखिए कैसे maximum stop loss just jumped up to this level to make you better exit from a trade that started around here. Now it is marginally bearish. A sell signal has come, but this is a very strong support, 103.8. So it may remain in a range or come down to the next supports towards 103.4 or 103.35. Gradually, dollar index is down. That means it may not be great to overall short dollar index, but different currency pair हो सकता है जिसमें opportunity बेहतर हो सके डॉलर येन में हम लोग शॉर्ट ना कर पाए, मे बी यूरो यूएसडी विल बी एबल टू बाय. तो चलिए पहले यूरो यूएसडी जिसमें मैं पोजीशन ऑलरेडी डाला हूं, कल आई हैव एंटर्ड यूरो यूएसडी, तो उसमें आई विल डिस्कस दिस. This is देखिए buy signal. Now I had to make a choice since my time frame closes before the actual closing. So I decided it's okay for the FOMO quantity. And now as per pyramiding rule, its a background is now green. Today candle is a new high it's making, so I can add some more quantity. But I will continue to add small as because the risk management tool others are asking me to do so. अब इसको थोड़ा चेंज कर देंगे फोरेक्स और करेंसी में. आई विल चेंज इट. सो यूरो इज इन द राइजिंग मोड, वो तो क्लियरली दिख ही रहा है. और बट यहाँ पे प्रेफर्ड ट्रेड्स एज पर ट्रेंड के हिसाब से सेल ब्रेकडाउन और सेल रेजिस्टेंस, तो दैट्स अ कंसर्न. इसके वजह से वी शुड डू लोअर क्वांटिटी. और बाई ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी देखिए वो भी लो 36 और कंसोलिडेशन का 43. तो मतलब बुलिश रेंज हुआ है ये मार्केट rather than outright bullish. But this could be a starting, this could be a beginning of a good ride. That's why we will start with the quantity. मैं उसमें चालू कर चुका हूं and I will stay here. First of all अब increase होगा quantity, and now I will be continuing with the maximum stop loss and see how it goes. बीच में अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज हुआ, डेफिनेटली आई विल एग्जिट. इफ द मोमेंटम चेंजेस आई विल कंसीडर द पार्शियल एग्जिट. सम क्वांटिटी आई विल ट्राई टू सी हाउ इट गोज अंटिल द मैक्स स्टॉप इज हिट. इसके साथ साथ यूरो आईएनआर कल अच्छा नहीं था. इट वाज नॉट दैट ग्रेट कंपेयर टू द यूरो यूएसडी. देखिए इसमें बाई जो सिग्नल आ रहा है वो आ जा रहा है, कल अवेलेबल नहीं था बिकॉज आईएनआर वाज स्ट्रॉन्ग. So Euro INR is getting a bit of a buy signal today. So इसमें I will think about adding some quantity. But main problem is risk reward is not favorable right now. But this is not, I'm entering to see if it reaches 77. It rather मैं enter नहीं करूँगा, I'll wait. But very likely I'll add a FOMO quantity. I am aware that यहाँ पे जाने के बाद एक correction होगा. I will see how it goes. First, I'll maintain with the max stop loss.
And once the empty line breaks later on, there I will be preferring to add more quantity. इसमें I'll not use the pyramiding. इसमें I will use the FOMO and wait it out. इसके साथ आ रहा है GBP USD. It is still within our range. It is have been spending time in a range. मुझे लग रहा था शायद breakout होगा, वो did not work out. After small move, we have full exit आ चुका है. It's going further, but candles are too small to decisively act on anything. तो इसमें अलर्ट लगाने के अलावा कि 1.27 का ब्रेक और शॉर्ट ट्रेंड बुलिश, ये जो शॉर्ट ट्रेंड मतलब बैकग्राउंड, वो शॉर्ट ट्रेंड बुलिश अलर्ट के बाद मैं देखूंगा उसमें कुछ कर सकते हैं कि नहीं. बट अभी के लिए आई विल प्रेफर टू स्टे आउटसाइड. ये एक बायर्स की तरफ जा रहा है, ये एक मौका हो सकता है, बट इट्स एज वेल एज रिस्क, नॉट वर्थ फॉर मी टेकिंग. So I will prefer to avoid these ones. So GBP USD, though it has been strong, it is not ready for me. I'll wait. It could break on the downside. It could, such small candle can break on the any side. कोई भी side break हो सकता है. So इसमें I'm not interested. JPY INR I've been short in JPY INR. After this partial closing, I'm continuing the maxed stop loss के साथ कुछ position. डॉलर अभी वीक है, दैट इज नॉट वेरी फेवरेबल करंटली फॉर द मेरा पोजीशन के लिए. यूएसडी जेपीवाई में करेक्शन हो रहा है, एक बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है. तो ये यूएसडी जेपीवाई से भी हम लोग जेपीवाई आईएनआर का क्यू ले सकते हैं. और जेपीवाई आईएनआर अगर यूएसडी जेपीवाई का बैकग्राउंड अगर येलो है एंड इट इज स्टिल आफ्टर, इसी तरह रहा आफ्टर यूरोपियन मार्केट्स खुल गया, वी कैन थिंक ऑफ reducing some quantity, focusing on this on JPY INR. But broadly still, JPY INR, I think I'll remain bearish because INR थोड़ा बहुत strong है. एंड इसमें भी मैं थोड़ा पोजीशन मार्जिनली बुलिश प्रेफर करूंगा. दिस इज बीन अ गुड लेवल. अगर सस्टेन हुआ इसके ऊपर, देन वी कैन सी सिग्निफिकेंट अपसाइड ऑन डॉलर. और ये जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट भी दिख रहे थे, दे आर लुकिंग डॉलर पॉजिटिव, थोड़ा ब्रेक होने का पॉसिबिलिटी है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. इसके साथ साथ और एक पेयर यूएसडी आईएनआर, आई डोंट ट्रेड दिस वन मच बट मैं इसको इस्तेमाल करता हूं टू क्रिएट द सिंथेटिक पेयर्स. ये धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे जा रहा है. यूएसडी आईएनआर हैव बीन स्ट्रांग, तो दीज आर द ऑप्शंस. 83 वी कैन कंटिन्यू टू सेल. थोड़ा पोजीशन हम बियरिश रख सकते हैं स्पेकुलेशन के लिए, बट दिस इज द वेरी मच रेंजिश पेयर. If all goes well for the bears, the target very likely 82.54, which is still about 40 paisa away. I don't see any reason for a major down move, in sudden drop. But yes, it can further go down. Once the 82.85 level cleared, very likely it is going to drop towards 82.55. But with such range, it will be very difficult to say whether it is going to drop soon or it will be a very gradual move. इसके साथ जो पेयर में मैं और जुड़ा हुआ हूं, दैट इज थोड़ा पोजीशन पाउंड येन के साथ. पाउंड येन के साथ थोड़ा पोजीशन में ऑन द बाई साइड इसमें जुड़ा हुआ हूं. मार्जिनली इट्स अप. And I'm also with this one euro yen. इसमें भी मैं बुलिश होके वेट कर रहा हूं. फर्दर से ग्रेजुअली धीरे धीरे ये राइज हो रहा है, ट्रेड प्रॉफिट्स में जा चुका है, बट सिग्निफिकेंट मोमेंटम नहीं आया कि जबरदस्त मूव हो रहा है, ऐसा नहीं. क्योंकि ओवरऑल डॉलर इंडेक्स अगर स्ट्रॉन्ग है इस बार, यूरो एंड येन दोनों वीक हो रहे हैं, तो दोनों अगर सिमिलर साइड मूव कर रहे हैं तो ग्रेजुअल परफॉर्मेंस आएगा. बट दिस ट्रेड हैज बीन इन प्रॉफिट सिंस द एंट्री एंड ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं. So I think I'll continue with this one and see how it goes.
इसके साथ साथ हम लोग जो देखते हैं प्रेशियस मेटल्स, ये फॉरेन एक्सचेंज के साथ ट्रेड करना चाहिए। गोल्ड हैज बीन रिकवरिंग, आई हैव रिड्यूस फर्दर क्वांटिटी, बैकग्राउंड ये हो गया था और अब तो बैकग्राउंड ग्रीन हो चुका है। आई स्टिल इट कैन ड्रॉप बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अनलेस 2038 to 2046 breaks for this XAU USD spot contract, very unlikely we can be sure okay this is a major। इसके बारे में we were aware because silver was strong। सिल्वर में हम लोग बात किए थे दैट सिल्वर में एंट्री का कल मैं हाईलाइट भी किया था अपने ग्रुप में, that silver still giving out, forming a good base। And there the silver was showing the buying opportunity unless this 22.95 level breaks, there silver likely to see some further gains because it is at least building a good base। It is at least will try out 23.44, एक बार फिर से ऊपर की तरफ टारगेट होगा unless this 22.95 breaks down। तो सिल्वर जो है काफी पॉजिटिव मतलब बेस है बना रहा है, अभी भी आप जंप करने लायक बना नहीं है बट बेस बना के लग रहा है दिस इज हैज बीन अ पॉजिटिव बेस फॉर्मेशन फॉर सिल्वर। बट गोल्ड सिल्वर सिग्निफिकेंट कुछ करने के लिए आई थिंक हमें अभी भी इंतजार ही करना पड़ेगा। हम लोग अभी जो जिसको देख रहे हैं वो है गोल्ड मिनी, जो एमसीएक्स में पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए नाइदर फुल ग्रीन कैंडल नाइदर फुल रेड, तो इसमें हम लोग बाहर ही रहेंगे। सिल्वर ऑन द अदर हैंड यहाँ पे देखिए भले ही ट्रेंड के अगेंस्ट है बट इट्स अ फुल ग्रीन कैंडल, मोमेंटम लुक्स मच स्ट्रॉन्गर, सो अपॉर्चुनिटीज है बट रेजिस्टेंस है काफी सारे स्ट्रॉन्ग 71,655 के आसपास, 72,400। सो देयर विल नॉट बी एन इजी राइड unless silver can significantly clear this 72,550। उसके बाद इट कैन सी अ राइज टिल 73,145। फाइनली दिस माउंटेन टॉप क्लियर होना पड़ेगा बट अल्टीमेटली सिल्वर हैज टू क्लियर अप 75,000 टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ मेगा रन। So currently that means it's more and rangish price action। So silver में हम लोग marginal bull position hold कर सकते हैं but nothing big। और अभी फ्रेश एंट्री के लिए व्हाट वी कैन डू इज, जो हम लोग कर सकते हैं कि 125 मिनट के टाइम फ्रेम में वी कैन वेट फॉर एटलीस्ट शॉर्ट ट्रेंड बुलिश, ये बैकग्राउंड येलो है जिसको शॉर्ट ट्रेंड बुलिश अलर्ट लगा दीजिए। once it is hit then we will be that could be an opportunity to enter। कोई भी अलर्ट क्लोजिंग पे वैलिड है, वो वैलिड होना चाहिए ऑलमोस्ट क्लोजिंग तक। ये हो गया करेंसी का पार्ट। अब हम लोग आ जाएंगे कमोडिटीज में। कमोडिटीज में आई एम लुकिंग एट कॉपर और सेटअप को चेंज कर लेंगे कमोडिटी में। So we have changed the setup into commodities and we have started with copper। Copper is consolidation के बाद फिर से बुलिश होने का मौका मिला था, बाय सपोर्ट एंड दिस इज द बाय ब्रेकआउट हुआ है 723.3 लेवल का। ब्यूटीफुल राइड अप हो रहा है 726.4। यहाँ पे मैं ओरिजिनल कैंडल लाऊंगा, इट इज गोइंग टू हिट द अपर लेवल ऑफ, ये जो हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे कि माउंटेन टॉप का जो रेजिस्टेंस है कॉपर ब्यूटीफुली वहां पे हिट करने जा रहा है। इट हैज बीन एन ऑसम मूव, ऑसम ट्रेड, होप यू ऑल एंजॉयड द राइड। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जिंक, इसमें भी अपना आउटलुक ब्यूटीफुली बाइंग था। After that, we had a correction chance। Zinc has not given us any kind of further opportunity like copper to enter। तो इसमें एंट्री करने के लिए हम लोग जो अलर्ट लगा देंगे उसका नाम है प्राइस एक्शन बुलिश। दैट्स इट।
which is a full green candle, उसके बाद हम लोग consider करेंगे and that will be a buy support signal if short term momentum अगर अपने साथ हो। उसके साथ साथ हम लोग जो करेंगे क्रॉसिंग अप, ये अलर्ट भी डाल देंगे। देन वी विल हैव जिंक। उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम नीचे के डाउन मूव के बाद इट इज नाउ कमिंग बैक। चाइना का पॉजिटिव मूव वो बेस मेटल में रिस्क सेंटिमेंट को बूस्ट किया है सिग्निफिकेंटली। चाइना का जो मूव हुआ है ऑन द पॉजिटिव साइड, एल्यूमिनियम काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स को टेस्ट करने वाला है। 202.50, 200.80 और यहाँ पे 203.5। रिस्क रिवॉर्ड एल्यूमिनियम में उतना फेवरेबल नहीं है। आई विल बी क्लोजली वॉचिंग जिंक फॉर ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी वंस द सिग्नल कम्स। इसके साथ साथ हम लोग अब आ जाएंगे एनर्जी में। एनर्जी में हम लोग देखेंगे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल चार्ट। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यूएस ऑयल स्पॉट। डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस कि दिस इज crude oil. Now with this red caps in crude oil, the upside is getting hampered. हम लोग डिस्कस किए थे, this is an important resistance और वहीं पे crude oil is taking the resistance। so ये एक करेक्शन टाइप ऑफ चल रहा है। तो सेम जो हम लोग डिसाइड किए थे, एनी क्वांटिटी दैट आई वांट टू होल्ड आई शुड होल्ड विथ much smaller position unless this level clears up। क्रूड गिव्स अस मोर कॉन्फिडेंस ऑन द ट्रेड। एक बार फॉरवर्ड कर्व को देखेंगे, CL1 माइनस CL2 forward curve, the current candle is you can say smaller than the previous, that means एक correction चल रहा है। So crude oil forward curve is undergoing a correction. The price है also undergoing some correction. But this is जितना देख के लग रहा है, this has been a positive move। ये जो दोनों साइड volatility होगा, the candle was anyway suggesting that with the increase in the size both side। अब इसके साथ साथ अब अगर हम इंडिया वाले क्रूड ऑयल को देखेंगे, या फिर हम लोग इंटरनेशनल को एक बार देखते हैं। दिस इज दो इट्स 10 मिनट्स लेट, इट्स स्टिल न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज, इट्स वर्थ लुकिंग एट। व्हाई द प्राइस इज, this is a correction that is happening, a correction happening, candle size छोटा हो रहा है। this is clearly significantly a correction that is happening in the market। so broadly मेरा आउटलुक रहेगा marginally bullish position, nothing big on the crude oil। और जो हम लोग बुल स्प्रेड बिठाए थे, वो बुल स्प्रेड will prefer to continue with small quantity। so let's see how it goes, the overall crude oil in the future। इसके साथ साथ और एक जो हम लोग देखेंगे वो है नेचुरल गैस। हम लोग देखेंगे 125 मिनट्स में। इसमें हम लोग मोमेंटम लॉस की बात किए थे कि देयर कुड बी अ कमबैक, और वही हो रहा है कि एक बाई सिग्नल के बाद नाउ वी हैव अ फुल ग्रीन कैंडल, बिग ऑपोजिट साइड मूव इन नेचुरल गैस। लेट्स इंटरनेशनल नेचुरल गैस को देखते हैं। 125 मिनट का चार्ट मेरा ट्रेडिंग फ्रेम है। इसमें एक बाय का मूव आया था। नाउ दिस बाय इज आई डिड नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि ये देखिए दिस इज अगेंस्ट द मेन ट्रेंड लाइन, सो कॉन्ट्रा इन 125। इसके साथ साथ मैं डेली चार्ट में चला गया, विच इज द अपर टाइम फ्रेम फॉर मी,
And here I can see that if I buy, obviously a correction, if I buy, it is also against the main trend here. So it is a double contrast. So double contrasts are very risky trades, though this one has given profit, but it's better to have a breakout. Once it is no longer a double contra, I will prefer to go for some quantity. Currently it's too early, but it is definitely, it was a beautiful exit. What a wonderful move it has given. And we had a beautiful down move ride in natural gas here in India. So after first time since about February, this is the first time natural gas, 6th February, natural gas has shown some strength. And this kind of green background strength has not shown since almost 5th of, so almost 2 weeks. 2 weeks natural gas has been completely battered. अब थोड़ा bullish दिख रहा है, very likely एक consolidation phase में जा सकता है. So ये हुआ मेरा overall currency and commodity का report. I hope you enjoyed it. This will help you to do your trades. अगर इसमें आपको help हो रहा है, don't forget to like and subscribe. Happy trading.